the aircraft as he now carries out a roll in front of the dais as a salute. And that was the basic trainer aircraft of the Indian Air Force Academy, the Pilatus PC-7 Mark II. This is your commentator, Flight Cadet Simran Kaur Gill. Jai Hind. जय हिंद, सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों। मैं स्कॉलर अर्पिता मुखर्जी सारंग टीम की उद्घोषिका आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। हम सौभाग्यशाली व गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ हमारे माननीय मुख्य अतिथि व अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद हैं। आज का दिन 206 पीसी के लिए व उनके परिवारजनों के लिए एक यादगार दिन है, जब सालों से संजोया हुआ वह सपना जो देश के व भारतीय वायुसेना के जाबाज सिपाही बनने का था, वो आज पूर्ण हुआ। एक नवोदित अधिकारी के रूप में पूर्ण रूप से अपनी नई चुनौतियों और जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए 206 पीसी पूर्णतया से वचनबद्ध व तैयार है। आज इस दिवस को और अधिक यादगार बनाने व इनका भव्य स्वागत एक अधिकारी के रूप में करने के लिए हम कुछ खास प्रस्तुत करने जा रहे हैं। Jai Hind and a very wonderful morning, ladies and gentlemen. Another successful year has been marked by this prestigious academy. This year is indeed special as it's proven once again that no adversity is big enough to even pause the josh of the guardians of our country's cause. This very place, which molds the youth into a formidable force in themselves, is the testimony that Air Force Academy has been and will be the backbone of the Indian Defence Forces. Today is a proud moment for families of these newly commissioned officers, and though they are not present here, but their wishes can be felt in the air. So what's better than taking this celebration to the skies? It's a bright day and blue backdrop, perfect for turning the sky into the palette of colors of display flying, especially customized to mark the passing out parade of 206 PC. It is our way to salute the indomitable spirit of the air warriors that beat the adversities into submission. Year 2020 marks as the 17th year of display flying by this first ALH unit, which was named after our national bird, peacock, which is called Sarang in Sanskrit. And now, as I was talking about the display flying, there is something very special for you. In display flying, it's all about teamwork and precision, and as our motto goes, but for the rotors, we have been closer. So here we are to dazzle the arena. Ladies and gentlemen, presenting to you the Sarang helicopter display team. The team is maintaining the wine glass formation while raising a toast on this momentous occasion of passing out parade of 206 PC. Sarang 1 is leading the formation with Sarang 4 right behind him, with Sarang 2 and Sarang 3 formatting to his left and right. Leading the formation is the team leader, Wing Commander Girish Komar, a qualified flying instructor and an instrument rating instructor and examiner. He has been one of the pioneers seen through the fledgling Sarang team to today's one of its kind in the world. The co-pilot of Sarang 1 is the youngest display pilot of the team, Flight Lieutenant Dhanveer Singh. And as you can see, turning right, there is a change from inverted wine glass to India formation, making an English letter I in the sky. This I stands for you, me, our motherland, and for these indigenously developed helicopters. Here it is, Sarangs coming in for India formation. भारत माता की जय का आह्वान करते हुए सारंग अब इंडिया फॉर्मेशन आपके सामने से गुजरते हुए Captain
captain of Sarang 2 is Wing Commander Sridhar, a qualified flying instructor and an IRIE. The co-pilot of Sarang 2 is squadron leader Manoj Manuel. He is experienced on Chetak and also on ALH Mark 3. The pilot in command of Sarang 3 is squadron leader Ravish Kumar. He is a QFI and a glacier cleared captain. His co-pilot today is squadron leader Adarsh Thakur. With an immense experience of flying in East, now squadron leader Karthik is in team as captain of Sarang 4 and his co-pilot is Wing Commander Niket Tiwari, who is a QFI on fixed and rotary wing aircraft. देवियों एवं सज्जनों, अब आपकी बाईं ओर से सारंग अपनी संरचना में एक नायाब आकृति लेते हुए दिखाई देगा। इस आकृति को हम डायमंड फॉर्मेशन कहते हैं। कुछ ही क्षणों में लीडर की कमान के साथ आप संरचना में बदलाव देख पाएंगे। और इसी के साथ बदलाव आपके ठीक सामने ये हीरा है खास तौर पर इस टर्म के चैंपियन स्क्वाड्रन चिटनेस स्क्वाड्रन के लिए। Oh, that's definitely a surprise for us. All of a sudden, number 4 has pulled up for the stall turn. I'm sure the captain of number 4 has decided to follow the social distancing norms this time. And as Cats and Nike are going for a short break, may I request you to wave at them and wish them a very good luck. Here they make their short exit. As we look slightly to the right, Sarang 1, 2 and 3. Positions for the team's signature maneuver now. The Dolphins Leap. This maneuver requires a very high degree of skill achieved by strict mind and body coordination. All 3 helicopters flying abreast will pull up in the vertical plane and carry out a synchronized toe turn to the left. Get ready, here comes Sarang. Like the dolphin in the ocean, Sarangs and dolphins leap. And that's number 4 accelerating to join up with his formation. The team performs under the ever-watchful eyes of the team's safety officer. Today's safety officer is squadron leader Jagan. Assisting him, our safety officer 2 Sergeant S.K. Sharma, along with the videographers. Ladies and gentlemen, ALH fleet in the IAF has steadily grown from the conventional ALH Mark 1 to Mark 4. The ALH Mark 4 is the weapon system integrated version with its air-to-air and air-to-ground weaponry. Along with the modern avionics, is one amongst the lethal arm platforms with the IAF today. The flexibility of this aircraft has been time-tested from varied operations to SWAV displays. On this note, set your gaze straight ahead. The team is rolling in for the crossover break. We shall stand by for the leader's call. Set your gaze straight ahead now. That was the leader, and here you see the reaction. Ladies and gentlemen, the crossover break. ये खूबसूरत पक्षी
अपनी बेबाक और बेफिक्र उड़ानें भर पाते हैं, क्योंकि इसके पीछे निरंतर व अथक कार्य करते हुए तकनीशियनों का दल है। और इस दल का नेतृत्व बड़ी ही कुशलता से करते आ रहे हैं विंग कमांडर हिमांशु पुरोहित, और इस मुश्किल कार्य में उनका लगातार साथ देते हैं विंग कमांडर नरेंद्र सिंह, स्क्वाड्रन लीडर सतीश और स्क्वाड्रन लीडर सेल्विन। These highly skilled pilots leave no opportunity unturned to show off the capabilities of these indigenously developed helicopters which they fly. The other pilots of the team are Wing Commander S.K. Mishra, who's the flight commander, Wing Commander Sneha Kulkarni, Squadron Leader Gopi, Veer, JP, Mukesh, Mahesh, Shekhar and Flight Lieutenant Akshay. And now get ready to feel the heat go up, coming in for level cross. That was a perfect cross indeed. वो कहते हैं ना कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। इसी जुनून और जज्बे के साथ एक बार फिर आ रहे हैं सारंग 3 और सारंग 4 हाई स्पीड क्रॉस के लिए आपकी दाहिनी और बाईं ओर से। और खास हमारे अतिथि गणों के लिए अपना ये मनूवर दोहराते हुए एक बार फिर आप देख सकते हैं सारंग 3 और सारंग 4 को। Integrity in diversity is India's distinction that trickles down to our team as well. Coming from diverse cultural backgrounds, speaking different languages, we all work together towards a common aim of winning hearts and saving lives. On this note, presenting to you a beautiful pulsating Sarang heart. A special heart for 206 PC with love, Sarangs. Our team boasts of the finest air warriors of the Indian Air Force, an embodiment of the professionalism and ethos of the IAF. The Sarang team has time and again been called to the fore in humanitarian assistance and disaster relief missions. The team executed these missions with the same finesse with which it has been executing well choreographed maneuvers. इसी के साथ हमें यह बताते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि सारंग टीम देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एकमात्र 4 जहाजों वाला मिलिट्री हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है। और वर्ष 2003 में अपनी स्थापना के साथ ही आज तक भारत के साथ साथ सिंगापुर, चिली, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, बर्लिन, भारत और मॉरिशस में अपना हवाई प्रदर्शन कर भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व कर चुका है। देवियों सज्जनों, अब समय आ गया है जब हम डिस्प्ले के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, लेकिन हम ये आपको यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये मनूवर आपके जहन में अपनी एक खास छाप छोड़ जाएगा। वंदे मातरम की जोशीली धुन पर टीम सारंग स्प्लिट को अंजाम देगी और इसी क्षण लीडर एक हवाई सलामी देश व भारतीय वायुसेना को प्रदान करेंगे। लीडर की आवाज के साथ ही सलामी और इसी के साथ सारंग टीम नभः स्पृशम दीप्तम का आह्वान करती हुई After that scintillating display by the Sarang helicopter display team,
It is time now for the Surikiran aerobatic team of the Indian Air Force. I'm Squadron Leader Anjali Rai, the Surikiran team commentator, and it is my privilege to guide you through the display profile. In addition, I shall also try and relay the commands given by the team leader so as to give you all a feel of how close formation aerobatic display is conducted. Tied with an invisible string, the team will be presenting synchronous aerobatic maneuvers. Coupled with music, it appears to be a ballet in the air. Any aerobatic display is dependent upon the weather condition, and if the weather gods are smiling upon us, the team will present the vertical profile. However, in case of weather restriction, the team will restrict itself to the horizontal profile. नव किरण का रथ सजा, कली कुसुम से पथ सजा, बादलों के अनुचरों, स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। हरिवंश राय बच्चन जी की इन ही पंक्तियों की तरह आपसे कुछ ही क्षणों में आपके सामने होगी भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम। Ladies and gentlemen, presenting ambassadors of the Indian Air Force, the Surikiran aerobatic team. The team made an entry in shockwave formation and keep watching as they are turning at a speed of 700 km per hour. Soon the team leader will order a change in the formation. Leading the formation is Surikiran 1, Group Captain Anup Singh, Vayu Sena Medal. Flying right behind him is number 4, Wing Commander Mayank Nautiyal. The safety observer for today's display is Wing Commander Nikhil Bhatt. दर्शकों, जब तक मैं आपका परिचय टीम के सदस्यों से करवा रही थी, बाईं तथा दाहिनी ओर के सदस्य अब टीम लीडर के साथ स्थान में बदलाव लाते हुए कंधे से कंधा मिलाकर उड़ान भर रहे हैं। आपकी बाईं ओर से सूर्यकिरण टीम। कंधों से मिलते हैं, कंधे कंधों से बदल मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। आइए अब मैं आपका परिचय टीम के दाहिनी ओर उड़ान भर रहे सदस्यों से करवाती हूँ। टीम लीडर के ठीक दाहिनी ओर हैं सूर्यकिरण 2, विंग कमांडर उदित मेहता। उनके ठीक पीछे उड़ान भर रहे हैं नंबर 6, स्क्वाड्रन लीडर नवजोत सिंह। बाईं ओर के सदस्यों में शामिल है सूर्यकिरण 3, विंग कमांडर अतुल यादव तथा उनके पीछे उड़ान भर रहे हैं नंबर 5, Wing Commander Ajay Dasrathi. And ladies and gentlemen, as I was introducing the team members to you all, once again the team has brought a change in its formation. And you can see them moving towards you all from your left in wedge formation. धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर, अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, रुके न तू थके न तू, थमे न तू। और इन्हीं पंक्तियों की तरह बिना रुके बिना थके बिना झुके बिना थमे आपकी बाईं ओर से सूर्यकिरण टीम। Other members of the team include Squadron Leader Abhijit Singh, Squadron Leader Tejeshwar Singh, Squadron Leader Manik Bhalla, Squadron Leader Aman Salaria, Squadron Leader Rupam Bodloy, and Squadron Leader Deepankar Garg. And ladies and gentlemen, please keep your gaze riveted towards the formation, as you can see them once again bringing a change in the formation. And with this, the team has formed the shape of a goblet. With this goblet, we raise a toast to the newly commissioned officers of 206 Corps. And now, bringing the thrill closer to you all, the next change will be taking place.
right in front of you. So keep your gaze fixed on the formation. To strive for perfection, a team of over 100 technicians led by Wing Commander Nagendra and assisted by Squadron Leader Shyam Mohan, Flight Lieutenant Sudarshan, Master Warrant Officer Kuldeep Kumar, and Master Warrant Officer Shabir Ali support the flying effort. It is to their credit that all the gleaming hawks that you are seeing today are always on display. दर्शकों, अब समय है आपकी नजरें आपके ठीक सामने यानी 12 o'clock की दिशा की ओर लेकर जाने का। अब से कुछ ही क्षणों में टीम आपके ठीक सामने होगी विक्सन ब्रेक के लिए, और आपने जिन टीम के सदस्यों को एक अदृश्य डोरी से टीम लीडर के साथ बंधे हुए देखा है, वे उनके आदेश का अनुसरण करते हुए उनसे अलग होकर पूरे आसमान में सूर्य के किरणों की तरह बिखर जाएंगे। तो कृपया अपनी नजरें अपने ठीक सामने बनाए रखिए। Ladies and gentlemen, look straight ahead. The team is now approaching for Vixen Break.